Hello and welcome back. Today's lecture will discuss about what is vector, how you define vector, and how we add and subtract vector. So let us start with what exactly is a vector or how vector is defined. इस वर्ड से सबको अवेयर हो, वेक्टर. So vector has number 1 magnitude and second direction. Why we need direction for vector? Because for scalar what is required? Magnitude. But for vector we need to define its direction also. So why this direction? Because अगर फिजिक्स सीखना है ना, तो एक चीज़ हमेशा, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखो, वाई. कोई भी डेफिनेशन है, कुछ भी है, तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? वाई वी नीड डायरेक्शन फॉर वेक्टर. क्योंकि कोशिश ये नहीं करना है कि इसको याद कर लें, दैट विल नॉट सर्व एनी पर्पस. तुमको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो क्यों डायरेक्शन चाहिए वेक्टर में? मान लो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. कोई अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें, सपोज you are at some location, say X, and तुम अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हो and you ask कि तुम्हारे घर तक आना है, कैसे पहुंचेंगे? तो your friend Y says कि I am, and he asks you कि तुम कहाँ पे हो, है ना? टिपिकल जो क्वेश्चन होता है. And then he says कि you are approximately 6 kilometers from my house. 6 kilometers from my house. तो इस 6 किलोमीटर वाले इंफॉर्मेशन से क्या तुम उसके घर तक पहुंच जाओगे? What you will ask for? Direction. You will ask for, obviously. Next question that you will ask is, in what direction? So there are certain quantities जिसके complete description के लिए क्या required? Direction. Now, if you say, if your friend says कि हम 6 किलोमीटर दूर हैं तुमसे, तो वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो क्या है? इनकम्प्लीट है. तो उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या बताना होगा? डायरेक्शन. बट ऐसा हमेशा नहीं होता, हर एक क्वांटिटी के साथ नहीं है. जैसे सपोज आउट ऑफ से 2 कोई एक बहुत वेट गेन कर लिया था और वो डाइटिंग कर रहा है. सपोज तुमको ये इन्फॉर्मेशन है कि वो डाइट पे है, तो तुम ऐसे ही बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिए कि तुम्हारा अभी वेट कितना है ना? ही सेज कि नहीं, अब मेरा कम हो गया, नाउ आई एम 50 kg. फाइन. तो अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगे किस डायरेक्शन में, कि 50 kg किस डायरेक्शन में? ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा? नहीं आएगा ना. लेकिन जब वो तुमको एड्रेस बताया कि डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो क्या क्वेश्चन दिमाग में आएगा? डायरेक्शन. तो जब तुम मास की बात करते हो, तो डू यू नीड टू स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन? इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है किससे? केवल उसके वैल्यू से. बट वेक्टर के लिए क्या बताना जरूरी है? डायरेक्शन. यू नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन. सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाई यू नीड डायरेक्शन, तो उसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन वी नीड टू डिफाइन व्हाट? डायरेक्शन. नाउ पॉइंट इज, इफ अ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, then is it a vector? For example, if we draw like this, और यहाँ एक की है, एक सेल है, और तुम इस की को क्लोज कर दिए, and you have one ammeter here. What happens? There will be current or not? इस सर्किट में करंट होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा. ammeter you will have some deflection. Suppose current is 5 milliampere. So current has magnitude as well as direction. Is current a vector? Current is not a vector, although
Current has both magnitude and direction. So it means either this definition of vector is wrong or this definition is incomplete. So we need to add something more here. We need to add some point number 3 here. Fine. So vector is magnitude, direction plus something. What is that something? We'll come to that in a moment. So first write this down, leave space for point number 3, then we will proceed. फिजिक्स में हमेशा कोशिश करो कि क्लास में सारा कुछ लिखते चले जाएं, है ना? वो तुमको नेक्स्ट 2 साल यूज़ करना है. सो कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग. So leave space and then we'll come back to that definition part in a moment. Next is leave space for 2 lines and then write a question, how we write vector. How we write vector. How we write vector. So for vector, we place an arrow overhead. This is representation of vector. Now this does not give you direction of vector. It simply tells you that this quantity A is a vector. This is how we write a vector. We write like this also, AB. Now in some textbook, what will you find? That vector is in bold face. Instead of arrow, it will be bold face. Because if suppose you are typing anything in computer or say mobile, any word processor you are using, it is much easier to do what? Place an arrow or bold it? Placing arrow is easy or difficult? Difficult. What is easier? You select it and then you control B, what happens? You make it bold. But when you are writing, what will be easier? Arrow. So we always follow this. But in old textbook, in NCERT book also, what you will find? Vector is in bold face. So you should be very clear about it. And then for magnitude of vector, we use this symbol. We read this as modulus of vector A. Mod of vector A. Modulus or mod. Or instead of that mod, you can also write A without any arrow. That also is magnitude of a vector. So modulus of a vector means what? Modulus of vector means magnitude of that vector. And जिन लोगों का मैथ्स नहीं है, तुमको बहुत सारा मैथ का स्किल एक्वायर करना होगा, तो ऐसा एक कॉर्नर में कहीं कॉपी में लिखो मैथ स्किल. आई विल कीप ऑन डूइंग दिस. किसी एक कॉर्नर में लिख लो मैथ स्किल. और जिन लोगों का मैथ्स है वो तो मैथ्स में पढ़ोगे या जानते भी होगे बहुत सारे लोग. मॉड ऑफ एक्स is equal to x if x is positive and is equal to minus x if x is negative. This is how mod is defined. Mod of any quantity, mod of x is equal to x if what happens? X is positive and is equal to minus x if x is negative. It means, it simply tells you, suppose mod of 2 is simply 2, but if you take mod of minus 2, what you get? Plus 2.
Mod of -2 will be +2 or not? Why? Because -2 is a number which is less than 0. So answer is x or minus of x. But how much is x? -2. So how many times minus sign is there? Twice. So what you get? Plus. So moral of story is, if you take mod of anything, you get positive value or not. Mod means what number? Negative number or positive? So keep this thing in mind. Mod means you'll get positive value. Negative value is not possible. And we are using mod symbol for vector or magnitude of vector? So can we say, come back here, can we conclude magnitude of vector is always positive? So write that. Magnitude of vector is always positive. Magnitude of vector is always positive. So whenever you shall be dealing with vector or magnitude of vector, keep this thing in mind. Its magnitude cannot be negative. It is always positive. Fine? Now, there are special type of vector used in physics known as unit vector. We will discuss about unit vector later on. For unit vector, we use symbol like this. We read this as cap or hat. This symbol we read as cap or hat. So a cap or a hat. That represents a special type of vector known as unit vector. That is unit vector. So you know how to write a vector. You are supposed to place one arrow. For magnitude, either you take mod sign or that letter without any arrow, and cap or hat is for unit vector, special type of vector known as unit vector. Now, how we draw a vector? Next question, how we draw a vector? How we draw a vector? So, कैसे ड्रॉ करोगे वेक्टर? बताओ वेक्टर क्या होगा, शेप इसका? कोई कर्व होगा या क्या होगा? लाइन. So vector is a straight line. Now, straight line, how much is length of straight line? -2. So how much is length? Infinite. Now, अभी तुरंत हम लोग क्या कंक्लूड किए थे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव. ज्योमेट्री में एक टर्म तुम यूज करते हो, लेंथ. करते हो ना? लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. सो जहाँ डेफिनेशन लिखे थे, पहला पॉइंट क्या लिखे थे? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? सो स्लैश वी ऑल्सो यूज दिस वर्ड लेंथ ऑफ वेक्टर. वहीं पे लिख दो वापस जाके, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव. देन now if you say vector is a straight line, how much is length of straight line? Finite or infinite? So magnitude being infinite does not make any sense. So instead of calling it straight line, एक और term सीखे होगे तुम, line segment. What is line segment? Infinite length या finite length? So what is a vector? How we draw a vector? With help of straight line or line segment? So line segment has beginning and end, isn't it? Yes. So it has finite length, but a vector has a direction also. So better will be directed line segment or line segment with a direction. So how we draw vector? क्या आंसर हुआ? Line segment with direction. So write that, line segment with direction. Line segment with direction. Line segment with
direction. So this is your, say, vector A, and this point is known as tail of vector, and this point is known as head of vector. So vector has tail and head. And this length of vector is proportional to magnitude of that vector. Length of vector, this length is proportional to magnitude of vector. Length is proportional to magnitude. Right? Now, next, right, under what condition for, next, condition for equal vectors. Condition for equal vectors. बताओ दो वेक्टर इक्वल कब होगा? So first same magnitude and second same direction. Two vectors are equal if they have same magnitude and same direction. Fine. One or two, or one and two. Either same magnitude or same direction, or both conditions should be satisfied. Both conditions should be satisfied. They must have क्या होना चाहिए? Magnitude भी same होना चाहिए और direction भी same होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ, एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, मान लो ये कोई वेक्टर है. Let us say this is given vector. ये given vector है. 9-10 ज्योमेट्री में तुम सीखे होगे, a line or line segment is given, तो you can easily draw lines parallel to that given line or not. So we can draw lines parallel to that given line. Do that. Do that. ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ कर दो वहीं पे. केवल क्या होना चाहिए? कैसा लाइन होना चाहिए? पैरेलल. Do that. Now let us measure this length. इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं, और यहाँ अगर सेम लेंथ कंसिडर कर लें, सेम लेंथ कंसिडर कर लें, अभी खुद तुम बता रहे थे दो वेक्टर इक्वल कब होता है? ये बताओ, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर दे आर इक्वल और नॉट? Why? Same direction and length is magnitude. So this is also vector A. This also is vector A. This also is vector A. This is vector A. This also is vector A. So how many vectors A you have? Many. Fine. It means, सब बहुत कुछ important हम लोग conclude कर लेंगे. Can we say something like this? A vector can be redrawn. A vector can be from where? Particular point or any point? Particular point. If I wish, I can redraw vector from this point or not? From here or not? So on floor or not? So from what point you can redraw it? Particular point or any point? So right, a vector can be redrawn from any point. A vector can be redrawn from any point. A vector can be redrawn from any point. And keep one thing in mind, any means many. जब कभी भी फिजिक्स में या मैथ्स में ये टर्म मिले ना, any, इसका क्या मतलब है? Many. Any means many. So now how you will redraw that vector? ये बताओ, क्या करना होगा? What you are supposed to do? एक कोई वेक्टर गिवन है and you want to redraw it, तो क्या करना होगा? You need to draw a line parallel to it and take what length? Same length. Take same length. So ऐसा करते हैं, यहाँ पे कहीं एक वर्ड लिख लेते हैं redrawn. तुम भी बीच में कहीं लिख दो
रीड्रॉन, और एरो से ये सारा मार्क कर दो, ये सारा वेक्टर क्या है, गिवन है या रीड्रॉन है? रीड्रॉन. These vectors are redrawn. These are redrawns. Done? अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू अराइज करता है. जैसे जब तुम डोर से इंटर करते हो, कहीं भी डोर, सबको यूज किए हो डोर, है ना? सो इफ यू कंसिडर एनी डोर, डोर इज हिंज्ड और नॉट? एवरी डोर इज हिंज्ड. ये हिंज्ड है और नॉब होता है डोर में. कोई आज तक तुमको ऐसा कोई डोर मिला है जहां हिंज था वहीं पे नॉब था? नॉब दूसरे एंड पे होता है ना? क्यों होता है ऐसा? और जो डोर फिक्स कर रहा है उसको फिजिक्स का तो कोई नॉलेज नहीं. तो फिजिक्स का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है ना कि फिजिक्स पढ़ा हो. तो पॉइंट इज, सपोज ड्रॉ दिस डायग्राम, यू एक्सर्ट फोर्स एट दिस नॉब, देन विथ हेल्प ऑफ दिस फोर्स यू कैन आइदर क्लोज और ओपन दैट डोर. फाइन. सो फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. ड्रॉ रेक्टेंगल, उसको मार्क कर दो. राइट समवेयर इट्स अ डोर. अभी तुरंत एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं आइडेंटिकल. अभी तुरंत तुम क्या कंक्लूड किए थे? एक दूसरा भी डायग्राम ड्रॉ कर लो, डोर. अभी जस्ट ऊपर क्या लिखे हो? अ वेक्टर कैन बी रीड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट. ऐसा करते हैं, इस f को रीड्रॉ करके यहाँ ऐसा शो कर देते हैं. दोनों वेक्टर इक्वल है ना? ये लिख लो गिवन, और ये क्या है? रीड्रॉन. गिवन एंड रीड्रॉन. Does it amount to same thing? In this case, what happens? Door rotates or not? In this case, will that door rotate? What has happened to effect of force? Remain same or changed? अब मान लो तुमको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला, you are exerting force on door, find its say velocity or angular velocity, whatever it is, find so and so. तुम क्या किए कि वेक्टर को तो रीड्रॉ कर सकते हैं, तो कहाँ से रीड्रॉ कर दिए? अब क्या आंसर लिखोगे इसमें बताओ? Will it rotate? So how much will be acceleration? 0. तो यहाँ 0 लिख दिए, तो क्या नंबर मिलेगा बताओ जरा? 0 या नेगेटिव? आपको नेगेटिव नंबर मिलता है ना. अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 0 नंबर मिलता है या नेगेटिव में मिलता है? नेगेटिव में मिलता है. तो यहाँ तुम कुछ गलत तो नहीं किए, क्योंकि फिजिक्स में क्या सीखे अभी? तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको चेंज कर दिया. आई हैव रीड्रॉन इट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग. आई मीन जो कि गलत है वैसा तो हम कुछ किए नहीं है. सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? बट अगर तुम एक ऐसा केस कंसिडर करो, ड्रॉ अनदर डायग्राम. एक ऐसा ब्लॉक, 2 ब्लॉक शो कर देते हैं आइडेंटिकल. ड्रॉ दिस एफ एम एफ एम. दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो. ये बताओ, if I ask you how much is acceleration in say first case, what will you say? F by m. Second case, different or same? Same. क्यों? तुम यहाँ फिर से फोर्स को रीड, ये लिख लेते हैं गिवन, और ये क्या है? रीड्रॉन. Does it matter in this example? If you redraw this vector, does it, I mean, answer changes or remains same? Remains same, but in this case, तो इससे क्या कंक्लूड करें? Can we draw or redraw each and every vector, or certain vectors can be redrawn only? मतलब वेक्टर का ब्रॉडली कितना टाइप हो सकता है तब? 2. एक कौन सा? Which can be redrawn from where? Any point. और second, which can be redrawn or which cannot be redrawn? Which cannot be or should not be redrawn.
तो यहाँ पे पहले कंक्लूड करते हैं, ये रीड्रॉ करना, व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपन्स टू इफेक्ट ऑफ फोर्स, लिख दो यहाँ कहीं जहाँ भी स्पेस है, इफेक्ट ऑफ changes by doing what? By redrawing vector, the effect changes, but in this example it does not change. So a type of vector is known as free vector. ऐसा लिखो, types of vector, types of vector, types of vector. Number 1, free vector. Number 2, sliding vector. Number 3, bound vector. First is free vector, second sliding vector, third bound vector. Now in class 11 syllabus, or at this level in class 11 as well as class 12, you will come across mainly these two types of vector. But to begin with, initial 4-5 months you shall be dealing with free vectors only. इनिशियली तुम केवल फ्री वेक्टर से डील कर रहे होगे, तो इससे क्या होता है, यू स्टार्ट थिंकिंग कि सारा वेक्टर फ्री वेक्टर ही है. नाउ व्हाट इज फ्री वेक्टर, लेट अस फर्स्ट डिफाइन इट. तो आप अलग से लिखो फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर, a vector which can be redrawn from any point. A vector which can be redrawn from any point. A vector which can be redrawn from any point is free vector. लेकिन अब ये बताओ, क्या हर एक वेक्टर को तुम रीड्रॉ कर सकते हो? जो डोर का एग्जाम्पल बताए, नहीं कर सकते हैं ना. केवल एक लाइन और लिख दो, every vector is not a free vector. Every vector is not a free vector. ये clear है? Every vector is not a free vector. Every vector is not a free vector. Now, this sliding vector and bound vector we'll discuss later on. तुम अभी उसको नहीं समझ पाओगे, इसलिए it is no point discussing that. जो डोर का हम एग्जाम्पल बताए वहाँ पे we are dealing with this sliding vector, है ना. So we'll discuss about it later on. But क्या दिमाग में रखोगे, एक वेक्टर फ्री वेक्टर है, दूसरा क्या है, स्लाइडिंग. नो वन विल आस्क यू कि वेक्टर का क्या क्या टाइप होता है ना, ये कोई नहीं तुमसे पूछेगा. बट एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो. और फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, इट कैन बी. तो इनिशियली हम लोग कैसे वेक्टर से डील कर रहे होंगे, फ्री वेक्टर से. इसका ये मतलब नहीं कि सारा वेक्टर फ्री वेक्टर है. और फ्री वेक्टर को तुम क्या कर सकते हो, कहीं से भी रीड्रॉ कर सकते हो. इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग. फाइन. सो हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे. देखो इसमें हमारा एक पॉइंट मिसिंग है. क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन क्यों चाहिए, फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. लेकिन ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर. फाइन. सो suppose if I ask you how much is 4 plus 9, you will straight away say 13. Now if I ask you how much is vector 4 plus vector 9 equal to, what will you say? Is it vector 13? और स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं ऑलवेज, और यहाँ ऑलवेज और मे बी. राइट दैट.
क्यों है मे बी? क्यों है मे बी? क्यों है मे बी बताओ? बिकॉज जब तुम वेक्टर को ऐड करते हो तो क्या क्या ध्यान रखना होगा? उसका केवल मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन एज वेल, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसा कब आएगा? जब दोनों किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। क्या जरूरी है कि व्हेन यू आर एडिंग टू वेक्टर दे मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन? नो। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस मे बी. So these two equation tells us something very important, and that is ये जो तुम addition है ये क्लास 3-4 में कभी सीखे नंबर लाइन से and all that. You know how to add, you know how to subtract, you know how to multiply. अब ये बताओ, इस 4 + 9 is 13 without any doubt, but यहाँ तुम क्या लिख रहे हो? Maybe. It means law of scalar algebra, that is algebra that you know, is it applicable in case of vectors? तो यहाँ से क्या कंक्लूड करें इसमें? मे बी का मतलब क्या हुआ? Law of scalar algebra is not applicable to what? Vectors. So write that. Law of algebra. Algebra ही लिखते हैं केवल. Law of algebra. जो तुम कब पढ़े थे? क्लास 6 से 10 तक जो भी पढ़े हो algebra या arithmetic. So law of algebra, ब्रैकेट में कर दो स्केलर, ब्रैकेट ओपन करके स्केलर, ब्रैकेट क्लोज कर दो. So law of scalar algebra is not applicable to whom? Vectors. They are not applicable to vectors. So you know how to add, subtract, multiply, divide. But वो तुम कर सकते हो किसके साथ? स्केलर के साथ. हम लोग यहाँ किससे डील कर रहे होंगे? वेक्टर. तो क्या सीखना होगा? हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड व्हाट? वेक्टर्स. सो दैट इज इन द हेड वेक्टर अलजेब्रा. नेक्स्ट राइट वेक्टर अलजेब्रा. So why we need vector algebra? I know algebra, I know how to add, multiply, subtract. तो फिर हम क्यों ये पढ़ें? तो क्या जरूरत है बताओ? Why you need vector algebra? Because the law which you know, are they applicable here? अगर suppose कोई law exist नहीं करता है ना? जैसे तुम घर से यहाँ तक आए क्लास करने को, कुछ नहीं होते हुए भी एक रूल है या नहीं रांची में भी? क्या रूल है? किस तरफ चलना है तुमको रोड के? So there is a rule or not? अब सपोज अचानक एक अनाउंस हुआ कि कोई रूल नहीं रहेगा, जिसको जिस तरफ से जाना है जाओ, क्या होगा बताओ? घर वापस पहुंच पाओगे या केओस होगा? जिसको जो मन में आ रहा है वो कर सकता है. तो हम लोग को एक्सक्लूसिवली चाहिए रूल किस पर्पस के लिए? किसको ऐड करने के लिए, किसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए? वेक्टर. किसको मल्टीप्लाई करने और किसको डिवाइड करने? वेक्टर, है ना? अगर वो रूल नहीं है तब तो तुम जो चाहोगे वो लिख सकते हो. सो यहाँ जो रूल होगा वो एक्सक्लूसिव होगा किसके लिए? वेक्टर के लिए. तो गो बैक टू डेफिनेशन पार्ट. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे? स्लैश लेंथ. सेकंड क्या था? थर्ड मिसिंग था. पॉइंट नंबर 3 इज, वहीं पे लिख दो जो स्पेस छोड़े थे वहां. वेक्टर शुड ओबे, vector should or must obey law of what? Vector algebra. It must obey law of vector algebra. Now your definition is complete. Now you know how to define a vector. तो आज के बाद, अभी के बाद कोई भी तुमसे पूछता है व्हाट इज वेक्टर, तो क्या बताओगे? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट शुड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. फाइन. इसके लिए इसके जगह पे हम लोग कुछ और भी लिखते हैं, तो और करके वी विल ऐड समथिंग, वो बाद में ऐड कर लेंगे. बट अब क्या डिस्कस करना होगा? वेक्टर अलजेब्रा. सो नाउ लेट अस डिस्कस वेक्टर अलजेब्रा.